वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडहेसिव्स को। ये हमारा एडहेसिव्स का सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम लोग जो डिस्कशन का स्टार्टिंग है इसको सिंथेटिक एडहेसिव से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंथेटिक एडहेसिव्स होते क्या हैं। तो वो एडहेसिव्स जो कि नेचर से डिराइव नहीं होते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स केमिकल्स के थ्रू प्रोसेस करके बनाते हैं, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक एडहेसिव्स। तो सिंथेटिक एडहेसिव के वेरियस टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है विनाइल है, सेकंड जो है एक्रेलिक्स है, थर्ड जो है रिएक्टिव एक्रेलिक बेसिस है, फोर्थ है सिंथेटिक रबर, फिफ्थ है एल्डिहाइड कंडेंसेशन रेजिन, सिक्स्थ है इपॉक्साइड्स रेजिन, सेवेंथ है अमीन बेस रेजिन, एट्थ है पॉलिस्टर रेजिन और नाइन्थ है आपका पॉली ओलिफिन पॉलीमर। तो बेसिकली ये वेरियस टाइप्स ऑफ सिंथेटिक एडहेसिव्स हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विनाइल, जो आपका विनाइल एडहेसिव है इसकी। तो द विनाइल ईस्टर फैमिली से बिलोंग करता है और जिसमें वन ऑफ द पॉलीमर जो है वो विनाइल होता है और इट इज यूज्ड फॉर मेनली कोटिंग इंडस्ट्री में इसका एडेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। जो कोटिंग इंडस्ट्री होती है तो वहां पे ये विनाइल एडेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। द नंबर ऑफ विनाइल डेरिवेटिव्स इज वेरी लार्ज एंड ऑल हैव सब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। यानी कि विनाइल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं एडेसिव्स के, ये बहुत लार्ज फैमिली है और सबकी कोई ना कोई खास बात होती है। सम मेंबर्स आर प्रोड्यूस्ड ईदर एज एन इमल्शन और एज अ सॉल्वेंट सॉल्युबल टाइप। तो वेरियस सिंथेटिक एडेसिव में विनाइल जो एडेसिव है, तो इनके जो वेरियस एडेसिव्स होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ प्लेसेस पे एप्लीकेशन फाइंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द एडेसिव। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीविनाइल एसीटेट एडेसिव की। तो जनरली ये पेपर कन्वर्टिंग, पैकिंग, वुड, लेदर टाइल एंड होम हैंडीमैन एडेसिव्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर पॉलीविनाइल अल्कोहल एडेसिव्स जो बेस होते हैं, तो ये जनरली पेपर एप्लीकेशन एंड टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर पॉलीविनाइल ब्यूटारेल, तो ये जनरली लैमिनेटेड सेफ्टी ग्लासेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलीविनाइल फॉर्मल होता है, ये एडेसिव जो है वायर इनेमल में इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये जनरली पाइप एडेसिव्स होते हैं पाइप को ज्वाइन करने के लिए। और पॉलीविनाइल ईथर होता है, तो जनरली ये प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव्स होते हैं और इनका इस्तेमाल टेप्स वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये बात हो गई विनाइल एडेसिव की। अब सिंथेटिक एडेसिव में हम लोग बात करते हैं एक्रेलिक्स की। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द विनाइल बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि स्ट्रक्चरली जो एक्रेलिक्स हैं दे आर सिमिलर टू विनाइल्स बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड ईदर एज एन इमल्शन और सॉल्वेंट सॉल्युबल फॉर्म। दे आर यूज्ड एज पहला प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव, फ्लोरिंग, पेपर लैमिनेशन, टेक्सटाइल, फ्लॉकिंग एडेसिव। तो इन सभी जगहों पे हम लोग एक्रेलिक एडेसिव की बात करते हैं। अब ये वीडियो देखिए जो कि आपको ये बताएगा कि वेयर व्हाट आर द प्लेसेस, वेरियस प्लेसेस वेयर दीज प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव्स आर यूज्ड। This small bead is easy to handle, but when pressure is applied, its hydrophobic coating is ruptured, allowing the soft inner polymer to ooze out, making it sticky. अब सिंथेटिक एडेसिव से हम लोग बात करते हैं रिएक्टिव एक्रेलिक बेसिस की। तो एडवांटेजेस आर वेरी फास्ट बॉन्ड टाइम। जो रिएक्टिव एक्रेलिक बेसिस होते हैं दे हैव वेरी फास्ट बॉन्ड टाइम। देयर एबिलिटी टू बॉन्ड अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस। रिएक्टिव एक्रेलिक बेसिस जो है वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस को बॉन्ड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड जनरेशन एक्रेलिक्स, जिसमें टू कंपोनेंट एडेसिव्स with part A being a rubber dissolved in acrylic monomer and part B the peroxide catalyst used for metal to metal joining and metal to plastic joining। दूसरा है anaerobic जो एडेसिव, तो ये सिंगल कंपोनेंट टाइप होता है that remains stable in the presence of oxygen and only cross links in its absence, used in thread locking applications। तीसरा जो है कैनो एक्रिलेट, साइनो एक्रिलेट,
जो कि सिंगल कंपोनेंट है, that polymerizes very rapidly at room temperature. It is used where fast bonds are required. तो ये कुछ जो है आपके रिएक्टिव एक्रेलिक बेसिस के एडेसिव्स हैं। फिर बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। तो नेचुरल रबर इज अ पॉलीआइसोप्रीन एंड हैज गुड टेक properties but normally not very high strength. While with all rubber adhesives, it is used to add various resins and other compounding ingredients to give specific properties. पहला है पॉलीक्लोरोप्रीन। तो सिंथेटिक रबर्स में पहला है पॉलीक्लोरोप्रीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप यूज्ड फॉर कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स, bonds a wide variety of substances like wood, laminate, leather, etc. फिर है स्टाइरीन ब्यूटाडीन, प्रेशर सेंसिटिव टेप्स, टाइल एडेसिव्स, फ्लोर एडेसिव्स एक्सेट्रा। फिर आता है आपका सेरीन डाइन स्टाइरीन, तो प्रेशर सेंसिटिव टेप्स, हॉट मेल्ट एडेसिव्स। फिर है आपका पॉलीआइसोब्यूटाइन, पॉलीआइसोब्यूटाइलिन, तो ये इलेक्ट्रिकल टेप्स और सीलिंग टेप्स में इस्तेमाल होता है। फिर आपका है एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन, तो इसका इस्तेमाल लेदर, रबर, विनाइल एडेसिव में किया जाता है। फिर आपका है पॉलीयूरेथीन, इट इज ऑफन क्रॉस लिंक्ड विद एन आइसोसाइनेट यूज्ड इन विनाइल लैमिनेट्स। फिर आपका है पॉलीसल्फाइड, तो इट इज मेनली यूज्ड एज सीलेंट बट ऑल्सो विद इपॉक्सी रेजिन्स फॉर कंक्रीट एडेसिव्स। फिर आपका आता है सिलिकॉन, इट इज यूज्ड एज एन एडेसिव सीलेंट इन ग्लास टू ग्लास, ग्लास टू मेटल बॉन्ड्स। तो ये कुछ आपके सिंथेटिक रबर के जो है एडेसिव्स हो गए। तो ये वीडियो में आप देख पा रहे होंगे सिलिकॉन एडेसिव यूज्ड इन पेस्टिंग ग्लास विद पैच फिटिंग। अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक रबर बेस्ड एडेसिव्स की। तो ये आप देख रहे होंगे, दिस इज अ सिंथेटिक रबर बेस्ड एडेसिव। तो इसमें आपका जो है स्टेप्स फॉर इट्स यूज, यानी कि हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस एडेसिव टू बॉन्ड दी टू सरफेसेस, तो उसका इसमें स्टेप बाय स्टेप इसका यूज दे रखा है। और साथ में ये भी मेंशन कर रखा है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फेविकॉल SR505, जो कि सिंथेटिक रबर एडेसिव है। इट इज यूज्ड फॉर पीवीसी फ्लोरिंग, फोम, रेक्सीन अपहोल्स्ट्री। और SR505 इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल बेंजीन। इसके जो फीचर्स हैं, एक्सलेंट स्प्रेडेबिलिटी कंपेयर टू अदर एडेसिव्स, इट कैन बी यूज्ड अप टू द लास्ट ड्रॉप, लॉन्ग लास्टिंग है, इकोनॉमिकल है और नॉन हजार्डस टू हेल्थ है। इट इज यूज्ड फॉर फ्लोरिंग, फोम रबर, AC insulation units, duct insulation units and under deck insulation। और साथ में आपको यहाँ पे व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ इट्स यूज ये दे रखा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें जो है फेविकॉल हीटेक्स सिंथेटिक रबर बेस्ड एडेसिव्स हैं। ये यूज किया जाता है, ये हीटेड रूफ एडेसिव है। तो इट इज यूज टू बॉन्ड प्लाईवुड, MDF पार्टिकल बोर्ड, लैमिनेट्स और फर्नीचर, अपहोल्स्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री। बस बॉडीज में यूज किया जाता है, बिल्डिंग टू पेस्ट, रूफ टॉप्स। तो इन जगहों पे इसका फेविकॉल हीटेक्स हीट प्रूफ एडेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। देन दिस एडेसिव इज फेविकॉल फॉमिक्स, इट इज अ सिंथेटिक रबर एडेसिव और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोफा, सुपीरियर क्वालिटी सोफा, चेयर एक्सेट्रा। its specific feature is that it is benzene free, non hazardous, it is long lasting, faster bonding and have a excellent spreadability।
These are available in various sizes from 500 ml to 25-liter drums. So this is Fevicol Foam Fix Synthetic Adhesive. अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक एडेसिव में एल्डिहाइड कंडेंसेशन रेजिन की. So these are condensation polymers of aldehydes with amino compounds and phenolics forming methylol derivatives. Some of their resins are the earliest synthetics developed. तो phenolic में पहला है abrasive discs, brake linings, foundry industry, fiber bondings and plywood. These are some of the places where phenolic resins are used. Resoxinol, they are used for manufacture of plywood. Then urea, it is used in particle board and plywood. Then melamine, they are used for particle boards. So these are some of the places where these resins are used. Now, discussing about the epoxide resins, the reaction between epichlorohydrin and bisphenol yields a large class of resin known as epoxy. These resins can be cross-linked to hard strong adhesives. इसमें पहला जो है वो है epoxy. This is the main group and is characterized by having the epoxide group ideally at each end of the molecule. The group can be cross-linked with amines and amides. The resultant adhesive is used in bonding metal, concrete, and ceramics, etc. Then phenoxy. These are high molecular polyethers, also derived from epichlorohydrin and bisphenol A in an equimolecular ratio. They differ from epoxy resins in that they are deficient in epoxide groups but have a high hydroxyl, which allows cross-linking with isocyanides, amines, etc. They are used in ceramic and metal bonding. Then method of using the epoxy resin. That is, what is the method of using the epoxy resin? So rough the surface, degrease the surface to be bonded, pour out equal amount by volumes, resin and hardener, mix thoroughly, apply thin layer on both the surfaces, clamp joint overnight as araldite sets. So this is the method of applying the epoxy resin. So here you can see the epoxy resin, adhesion with stone to metal, stone to wood, concrete and metal. These are some of the work that these adhesives do. They have excellent adhesion to many different materials, great strength and toughness, resilience, excellent resistance to chemical attacks and moisture, and they have electrical insulating properties. So this is araldite AW106 and a hardener HV953IN. This is Fevitite, another type of adhesives. Here you can find the specifications of its use. The specific features are also mentioned here. Moving to the next slide. This is Fevicol SR Express. Here you can see how to apply this adhesive. What are the container sizes, that is packing, available in the market? Features like more resistant to heat and light, faster drying, saves time, no odor, and used for the surfaces where it is difficult to apply pressure. So these are the specific features used for bonding decorative laminates and plywoods, in vertical lamination, rubber joineries, leather foams, fiber, metal, glass, ceramic, etc. Duct insulation, underdeck insulation. So these are some of the places where this Fevicol SR Express is used. Here, Fevicol SR998, you can see the features, application, and packing sizes that are available in the market. Now coming to Fevitite Vertimix. So this is another type of adhesive which is used to bond the surfaces. Specific feature is that permanent bonding is there, not sagging, consistency, quickly adjusting, non-staining, unmatched productivity, and installation speeds of tile and stone. So these are some of the features used for it is spot bonding the marble, granite,
large format ceramic tiles, etc. Adhesives for bonding masonry, precast concrete, etc. So these are some of the places where this type of adhesive is used. So it comes in 1.5 kg, that is 1 kg resin and 500 gram hardener. So both are mixed before applying. Now discussing the amine-based resins, there are many amine-derived polymers that show good adhesive properties. Most are condensation reactions and show good adhesion to metal, particularly at high temperature. So various types are polyamide, that is most polyamide resins are used with the epoxy adhesives. However, these resins similar to nylon based on the dimer acids used as thermoplastic adhesives in shoe, electronic industries, then polyamide used as aluminum to aluminum adhesive at elevated temperatures, then polybenzene Midazole used as aromatic with a dispathlate. It is used for stainless steel bonding. Then polyquinoxylene, an aromatic wise with an aromatic biglycol used for stainless steel bonding at high temperature. Then polyethylene mine, a highly branched polyamine. Particular interest is that it is water soluble, used for priming cellophane aluminum foil. So this polyethylene mine is a highly branched polyamine. Now coming to the next slide, synthetic adhesives, polyester resin reaction produced of dipolyalcohol and a polybasic acid. Unsaturated uses as cobalt salt together with a peroxide used for bonding glass fibers and metal to metal. Saturated thermoplastic type mainly used in shoe lasting operations. Then procedure of applying synthetic resin. So first is ensure both surfaces are clean. Stir the adhesive well. Apply the adhesive evenly to both the surfaces. Press the surface together and nail. On bonding, remove the nails. The polywood surface are ready to use. So this is the method of applying the synthetic resin adhesives. So here you can see a synthetic adhesive, that is Fevicol Speedex. The method of its application has already been discussed. This is wood grip synthetic adhesive. Now talking about the inorganic adhesives. So they are polyolefin, polymer, soluble silicates, and phosphate cement. Now starting with polyolefin polymers, polyethylene and other olefins can also be used in adhesives, particularly as the base for thermoplastic type. Normally, some modification with other resin is carried out. So first is polyethylene used as the base for hot melt adhesives in packing industry. Polypropylene used in packing hot melts. Ethylene vinyl acetate used for melt adhesives for packing, labeling, and bookbinding. Ethylene ethyl acrylate and ethyl acrylate group substituted for vinyl acetate. They have better adhesion to polyolefin. Then ionomers. So these are used for binding polyolefins. Then coming to inorganic adhesives, soluble silicates. So soluble silicates manufactured by melting silica sand with sodium carbonate and then dissolving it in water. They are used for bonding paper, corrugated board, metal to plywood bonds, and some versions can be used in refractory cements. So under the head of inorganic adhesives, we use phosphate cement products, यानी कि phosphate cement जो products होते हैं उनसे बने adhesives का इस्तेमाल करते हैं. मेन कंपोजिशन इज फॉस्फेट सीमेंट और इसमें या तो सिलिकेट फॉस्फोरिक एसिड होता है या जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है. दीज टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स आर यूज्ड एज डेंटल सीमेंट्स. अब नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स में.
hydraulic cements की. So these products set by hydration and include calcium silicate, lime cements, gypsum cements, etc. used for bonding stone chips as concrete grains to form mortar for bricks. So main properties हैं, they stop the active flow of water, it adheres to the wet surface and expands as it dries to fill the cracks. Mainly used for retaining walls, masonry walls, concrete blocks. So they find applicability in interior and exterior. They seal in 5 minutes. So one of the hydraulic cement category, that is epoxy shield. The box is shown in the figure. Now moving to the next slide, it is we are going to discuss some of the adhesives that are available in the market. So this is product name is Fevicol SH, synthetic resin adhesive. It is used in furniture industry and paper industry. Main advantages are heat resistant and water resistant, long storage life, economical in long run, unsurpassed bonding strength. So this is Fevicol Marine, mainly used where there is moisture. This is uh, Tuffex epoxy adhesive. This is M-Seal. It is mainly used for sealing liquid flows. Here you can see Fevicol DDL. So the main features and how to apply this adhesive is mentioned here. You can go through it. Then this is Mr. Bond, one of the adhesive. The characteristic feature is that it is specialized with HIT, that is high initial tact formulation and faster drying. Mainly used for bonding wood, plywood, laminate, veneers, particle boards, block boards, hardened boards, MDF to each other. It is excellent in vertical bonding applications and also recommended for bonding any two material where at least one of them is porous, example paper, cardboard, particle board, etc., and the other related application. In this figure, this is Jivanjor, a synthetic resin adhesive. It is a multi-purpose wood adhesive, long-lasting adhesion, hybrid polymer technology. So it is a all-rounder multi-purpose adhesive used in paper industry. Now talking about the various adhesives that are used at various places. So in paper industry, we use polyvinyl acetate, polyvinyl alcohol. In textile industry, we use polyvinyl alcohol. In glass safety, we use polyvinyl butyryl. For leather, wood, and tile industry, the adhesives have already been discussed. So now coming to the end, we are just uh, gone through some of the uh, adhesives that are available in the market. तो इसी के साथ आज का डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं. यदि इस डिस्कशन में आपको कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं. हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको, इसको कमेंट करके बताइएगा. और यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू.